गाली गलौज। मेरी सास मुझसे कहती तेरे पिता ने कार नहीं दी, मेरी बेटी को कार दी, तो मायके से कार 2 लाख रुपए लेके आ, तुझे नहीं रखना चाहता मैं, तुझे तलाक देता हूँ, अब यहाँ मत आना। 3 बार तलाक बोलकर घर से भगा दिया। मैडम पति ने मारा और क्या बोले? पति ने मारा, डावरी की डिमांड करी, कहीं तो कुछ तो आता आपने। मैडम आएगा आएगा, आने तो दीजिए अभी। और ये कहेंगे कि पत्नी हमेशा सच बोलती है, तो फिर हम इससे पूछेंगे आप कह रहे हैं। इट वॉज ऑन लाइटर साइड। मैडम ये तो खैर अच्छी पत्नी का द्योतक है कि वो बता रही थी देखो आप गलत काम कर रहे हो, आप जबरदस्ती फंस जाओगे। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज। They are the in-laws. In-laws, it is a very wider word. Irfan Khan is husband, प्यारे मियाँ, father-in-law, सायरा भी, इरशाद खान, देवर है, right sir. Which is that FIR? जी मैडम। Under 3 acts, the FIR was lodged: Muslim Women Protection Act, Dowry Prohibition, and the IPC. Lordship, it says पति, ससुर और सास सायरा और देवर इरशाद सबके खिलाफ इन्होंने तलाक का भी गाली गलौज। मेरी सास मुझसे कहती तेरे पिता ने कार नहीं दी, मेरी बेटी को कार दी, तो मायके से कार 2 लाख रुपए लेके आ, पति को बताती थी। पति कहते थे तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, मुझे कार चाहिए। देवर इरशाद मुझे कहता था तुम्हारे पिताजी ने दिया ही क्या है, सबको नॉर्मल, ये सबको नॉर्मल लोग देते हैं। कहता था तुमने लड़की पैदा की। मेरा देवर भी मुझे मानसिक रूप से, मैंने कहा तुम्हारा सुधर जाएगा, मैं पत्नी सहती रही। पति देवर ने 19/1/20 को मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मैंने खजूरी सड़क थाने में की थी। तो मैंने महिला थाना 2000 में आवेदन दिया था। फिर मैं ससुराल 7/6/2020 को चली गई। आते ही फिर से प्रताड़ना शुरू हो गई। 2022 में मेरे पति ने रिपोर्ट मारपीट की, फिर उस रिपोर्ट खजूरी सड़क पे गई। फिर दोबारा ये ससुराल गई, तो फिर 7/5/23 को मारपीट कर वापस मेरे मायके भिजवा दिया। फिर मेरी मम्मी ने पति को फ़ोन किया कि महविश को लेकर जाओ, तो पति मेरी मम्मी के साथ फ़ोन पर ही गाली गलौज करने लगे। फिर मैं दिनांक को अपने आप मम्मी के साथ गई, तो कहती है कि बार बार क्यों आते हो, तुझे नहीं रखना चाहता मैं, तुझे तलाक देता हूँ, अब यहाँ मत आना। 3 बार तलाक बोलकर घर से भगा दिया। मैं रिपोर्ट लिखवाने खजूरी सड़क गई, तो वहाँ 3 तलाक की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्योंकि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी। फिर मैं मायके आ गई, मेरे पास पति ने तलाक का नोटिस द्वारा दिया, और मेरे पति द्वारा मुझे एक तलाक वाइन दे दी है। उससे मेरा रिश्ता खत्म है। आज फतवा भी भेजा है जिसमें लिखा कि इरफान खान अब पति में लिखवाने नोटिस भेजा है। जी सर। जी मैडम। Sir, this FIR was lodged in year 2023. Lordship, I would like to draw your attention at A2, that is day 69. Earlier also, this lady has filed an FIR against petitioners. जी Says फरियादिया महविश खान पति इरफान खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी सुअनसो, भाई और पिता के साथ हाजिर अदालत जवाबी रिपोर्ट किया कि मेरी शादी 3 साल पहले इरफान से हुई थी, मेरी 2 साल की बेटी है। मेरे पति इरफान के साथ शादी के बाद से ही मैडम FIR में भी मारपीट के एलिगेशंस थे। केसेस में डावरी की कोई एलिगेशन नहीं। मैडम क्रुएल्टी के लिए मारपीट भी सफिशिएंट है। And this later on this was compromised and the A3 is the judgment for that. ये तो उसने FIR में भी लिखा है, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ये हो गया। अब सर इसके बाद जो इन्होंने तलाक के लिए इसमें एक नोटिस गई हमारी तरफ से, वो कौन सा नोटिस है? सर सब्सिक्वेंटली भी इन्होंने 2 NCRs फाइल करे थे हमारे खिलाफ में। मैडम वो तलाक का नोटिस क्या है मैडम? सर A7 and A8। ये तलाक बाइन क्या होता है? सर एक सिंगल टाइम तलाक दिया, उसकी इंस्टेंटेनियस, इमीडिएट। It's not instantaneous. That is talaq bidat. That is defined in the act. Only talaq bidat is defined in the act. Talaq bain and the other talaq is already pending before the Supreme Court for the adjudication. Now नहीं तलाक बाइन वैसे क्या होता है? एक बार डिवोर्स देना, अगर उसके बाद कोई भी it will come into effect immediately. Then subsequently what will happen, that there will be mediation. Nothing happens, then it will come into the effect. Okay. So whether according to you this talaq has come into existence or not? It has come into existence according to the religious structure. Now when the reconciliation took place? It never took place. In fact, she responded to my notice. Lordship में kind अभी आपने मैंने तलाक़े बाइन का मुझे exactly नहीं ये मालूम है, इसलिए when I try to understand
एक बार बोल दिया है, लिख के भेजा जाता हाँ नेचुरल है। है, तो जैसे कम्युनिकेट किया, उसके बाद उसमें एक रिकंसिलिएशन की प्रोसेस हुई। अगर आपने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है या आपने नोटिस रिसीव करके आपने उसको छोड़ दिया है, तो इट विल बी इररिवोकेबल सब्सिक्वेंट। अदरवाइज whether automatically this talaq ke bain will come into existence या उसके लिए फिर से कुछ होगा? इसके लिए दो स्टेप्स हैं। पहला, आपको ये कम्युनिकेट किया जाता है कि तलाक दिया है, फिर आप उस पर एक रिकंसिलिएशन होता है। अगर नहीं होता है तो फिर एक इद्दत का टाइम होता है जो कंक्लूड होता है, फिर देन दिस तलाक कंक्लूड्स। नाउ उसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है सर। इसमें वो होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और इसमें हमने वो भी पूछा था, ये रिवोकेबल भी होता है। नहीं वो ठीक है, वो तो इररिवोकेबल होता तो वो तो तलाक बिद्दत ही हो जाता फिर तो। अच्छा, अब इसमें आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। अब इसमें रिकंसिलिएशन वाला प्रोसीडिंग क्या हुई और सब्सिक्वेंट तलाक वाला क्या हुआ? रिकंसिलिएशन की प्रोसीजर तो कुछ भी नहीं करी। हाँ, हमें नोटिस की उन्होंने जवाब दी, दैट इज A7। तो फिर आपका कहना है ना कि एक और रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट कहाँ है? सर ये रिटन डॉक्यूमेंट है A7 11। ये तो उनका रिप्लाई है। प्रति में आप तलाक के क्या कौन सा वर्ड है, A7 तलाक बाइन के लिए आपने कहा था पहला एक नोटिस है, then a reconciliation proceedings will take place and thereafter again there will be one written document after इद्दत पीरियड का जो होगा। 3 महीने 13 दिन की इद्दत होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर रिकंसिलिएशन होना जरूरी है, सर रिकंसिलिएशन होना जरूरी नहीं है। वो लाओ जरा मोमडन लाओ यार, लाओ। सर इसमें अलग अलग स्कूल्स फॉलो किए गए हैं, हनफी, शियास का अलग है, सुन्नीस का अलग है। जो तलाक नहीं मैं एक्चुअली तलाक बैन या बाइन जो भी है उसका प्रोसीजर समझना चाह रहा हूँ। सर इसका अगर आप हमें पिटीशन से देखना चाहें, तो इसका हमने क्वेश्चन पूछा था काजी से, उन्होंने इसमें उसका रिप्लाई दिया रिलीजियस उस पे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैडम वो किसने क्या बोला, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, आई एम कंसर्न विद व्हाट द लॉ, मोमडन लॉ सेज अबाउट दैट। सर इसमें मोमडन लॉ में when talaq in writing becomes irrevocable in the absence of words showing a different intention, and divorce in writing operates as an irrevocable divorce, talaq bind, and takes effect immediately on its execution. Now execution is defined in the judgment of Sarabai versus Rabia Bai, Bombay High Court ka. Now it says, subsequently the commentary says, when this my letter reaches, though the talaq does not take effect until the actual receipt of the letter. This was in the judgment. Similarly, the writing says, I have divorced thee on the 15th September, and the period of free divorce will expire on so and so. The talaq contemplated by the husband is talaq hasan, and there is no divorce unless two more pronounced. मैडम मुझे तो तलाक के बैन का जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पे इररिवोकेबल डाइवोर्स दिख रहा है मेरे को ऑनलाइन। सर इसका मतलब एक सिंपल से इसका स्टेप ये होता है, 3 तरह से तलाक होते थे। पहले तो जो एक which was said to be on 1, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, दैट इज तलाक पैदा। नाउ देयर आर 2 तलाक लेफ्ट, तलाक बाइन एंड तलाक सुन्नत। इसमें तलाक व्हाट इज तलाक एहसान? तलाक एहसान, सॉरी, उसमें 3 महीने में 3 नोटिसेस जाते हैं इन 4 वीक्स। उसमें 3 महीने की 13 दिन की इद्दत होती है, उसमें 3 कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग होती है, वो कंप्लीट 2 गवाहों के सामने होता है। This is the actual prescribed procedure for the talaq. तलाक का बैन जो है इसका एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस है तलाक, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। अब तलाक के बैन जो ऑनलाइन दिखा रहा है, तलाक के बैन is an irrevocable divorce where the husband uses ambiguous words or phrases to divorce his wife. For example, get out, I don't want you, pack your bag, etc. तलाक में दैट्स व्हाट मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे तो वही है, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, सो आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दैट। अब इसमें है तलाक बैन विल ओनली टेक इफेक्ट इफ द हस्बैंड अटर्स द स्टेटमेंट्स विद द इंटेंशन ऑफ डाइवोर्स। द implication of talaq ban is once the husband issues his wife a talaq ban, she has to sit in idda for 3 menstrual cycles if she experiences menstruation, and 3 if she does not experience until childbirth is if she was pregnant. If the husband wishes to take back his wife, he may do so only after performing a new nikah. That period is something
in order to protect the paternity, I think so. Otherwise, from the husband's point of view, it is irrevocable. That was for the to check the paternity. Right. Otherwise, where talaq ban is given, then it is irrevocable on the part of the husband. And it comes into effect after the execution, after the when the notices is received. No reply. Notices has already been received because it is mentioned in the FIR. Now, as per Act, only talaq wither is punishable. मैंने अभी उसकी बात नहीं कही है, अभी तो उसकी FIR भी नहीं है, उसकी FIR भी नहीं है. Lordship, may kindly see the reply of the respondent for a while. मेरी पक्षकारा श्रीमती महवेश खान रत्नी श्री सो निवासी ने मुझे अपना अधिवक्ता नियुक्त कर आपके पक्षकार श्री इरफान खान पुत्र श्री प्यारे मियां. चले मैडम, वो तो तलाक़े का तो अलग से देखेंगे. अब आपके और क्या ग्राउंड्स हैं? सर A8 पेज 88 ये दैट इज तलाक की जो नोटिस इनको पहुंची उसका इन्होंने एक रिप्लाई दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक बार उसमें बताना चाह रहे हैं मैडम, उसका कंपैरिजन करवाना है क्या आपको मेरे को? इसका कंपैरिजन नहीं है, ये ग्राउंड FIR का जो ग्राउंड है वो यहीं से निकल के आता है. हाँ. इन्होंने कहा कि ये पक्षकारों के नाम है. फिर उन्होंने सर लास्ट 4th लाइन से आपके द्वारा प्रेषित नोटिस 11/8 को जो मेरी पक्षकारा को दिनांक 14/8/23 को प्राप्त हुआ का उत्तर उपलब्ध रिकॉर्ड मेरे पक्षकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है. ये इन्होंने सब कुछ लिखा. उसके बाद इन्होंने सर 3rd पैराग्राफ में कहा सॉरी 7th पैराग्राफ लॉर्डशिप पेज 90 या कि आपके पक्षकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवेल. मैडम वो सब ठीक है, FIR तो अभी इसकी नहीं है ना, इसकी भी है, प्रोटेक्शन ऑफ इसकी भी है. अभी तो बहुत चल रहा है, उसमें आप चलते रहिएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. I will not question it. Madam, that this talaq ban is also under consideration before Supreme Court. Sir, it is under consideration. No judgment has been passed. ठीक है, तो law which is not a crime yet. अभी तो आप पहले आप इसमें 498 पे आइए ना. तो 498 का तो क्रुएल्टी का ग्राउंड है कि पहले उन्होंने कुछ भी डिवोर्स का जो उन्होंने जिक्र किया, सॉरी डावरी का जो जिक्र किया, पहले उन्होंने कभी नहीं लिया. पहली बार उनकी ये डावरी की बात उनकी इस FIR में आई. Can I compare? Can I make a comparison at this stage? Stating a fact that if No, you are stating the fact. if Madam, please. It is not a question of simply stating the fact and then going. It is a question whether it can be considered by this court or not. the previous conduct has to be seen. So then, it has to be seen. Then an opportunity has to be given to the lady to explain it. It's already there. So I'm required to conduct a mini trial. What I'm saying that I am here on 2 points. There was any demand of dowry. 2 NCRs and 1 FIR was already filed. Yes. There was no mention of. Madam, where is the question of demand of dowry for alleging the cruelty? I'm saying there must be cruelty. I'm saying if their dowry specifies is very much. Fine. Let us ignore that aspect. 6-7 years of marriage. Madam, let us ignore that aspect. Let us say, just for the sake of arguments, that dowry demand was not there. But if she was being ill-treated, will it not be a cruelty? No, it is cruelty. Then. But for argument's sake, if I say if she was treated very, in a cruel manner. So, Lordship may kindly see her conduct also. That she. Madam, please. Madam, please. In order to judge the conduct of a person, whether I should give an opportunity to that lady to explain, or should I write the findings? Yes, he's appearing as a witness, no? He's appearing as a counsel, madam. Only the witness is to be cross-examined. And whether I am supposed to conduct a mini trial. Lordship, now I'm coming to the second part of the. Lordship like to hear the second part of the. मैं कुछ नहीं कह रहा. आपने कुछ sentence कहा कि for lordship is. I'm just saying that I'm coming to the second part of the FIR. अच्छा, मतलब अगर lordship को पहला part नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देते हैं. No, so since the dowry. Madam, the question is that if the uncontroverted allegations do not make out an offence, then I can quash the proceedings. If you say that these allegations are incorrect or though that allegation is correct, then it is beyond the scope. Being made and it is. Madam, पति ने मारा और क्या बोले?
पति ने मारा, डावरी की डिमांड करी, कहीं तो कुछ तो आता। आपने मैडम आएगा आएगा, आने तो दीजिए अभी। हुआ होता कहीं। अच्छी बात है मैडम। मैडम ये बताइएगा कि मेंटल क्रुएल्टी नहीं होती है। सब ऐसे तो फिर पति के लिए भी मेंटल क्रुएल्टी है, सही है। मैडम प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पति को डोंट टेक इट अदरवाइज। तो पति के लिए भी तो मेंटल क्रुएल्टी है। मैडम ये आप कह रही हैं? तो ये आप कह रही हैं? और ये कहेंगे कि पत्नी हमेशा सच बोलती है, तो फिर हमसे पूछेंगे आप कह रहे हैं? इट वाज ऑन अ लाइटर साइड, इट वाज ऑन अ लाइटर साइड, डोंट टेक इट सीरियसली। डिफिकल्टी ये है मैडम, how can I give a finding that who is telling a lie and to what extent he is telling a lie? Just to the second part of the FI, rest I'll leave to your lordships. Just may kindly see the reply of the respondent for a while. She threatened me to implicate in this FIR for the triple divorce case. This is my submission. Fine. If suppose if you have committed an offense, then pointing out that otherwise I will prosecute you, will it amount to threatening? When there is no offense, this amounts to threatening. अच्छी बात है। Kindly see the तो आप ऑफेंस रजिस्टर करवा दीजिए। तो आप ऑफेंस रजिस्टर। She got registered against me. How can I? Triple divorce के जब so woman power is more powerful, है? That is page 90 of para 7 में kindly see for a Page 19 para 7 para 7 जी मैडम, उससे हम क्या डिसाइड करेंगे 498A का? कहा कि तलाक बिदअत दी हुई है, इन्होंने खुद एडमिट किया कि तलाक बिदअत नहीं थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, से वापस नहीं लेते तो मैं आपको इस केस में फंसा दूंगा। जी सर, सही है। पैरा 7 ये कहता है कि आपके पक्षकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के मैडम ये तो खैर अच्छी पत्नी का द्योतक है कि वो बता रही थी देखो आप गलत काम कर रहे हो, आप जबरदस्ती फंस जाओगे। ये तो अच्छी पत्नी की निशानी है। She was trying to protect you, भाई ऐसा मत करो। Sir, it was not a instant triple divorce case. That is my submission. मैंने वही पूछा था, क्योंकि जो वो मैं ऑनलाइन देख रहा था वो ऐसा लग रहा था कि on your part it would become an irrevocable. And iddat period is only to ensure the paternity. That is all. This is what I could understand from this. Even in order to 60 plus. No problem, madam. No problem. Whether it can be revoked after the iddat period is over or during, after the period is over, or before the iddat period is over. If the execution has taken place, no divorce can be revoked. Madam. In this even during this 3 months, whether it can be revoked. Now this is the question where I haven't found any answer. No, madam, I'm not putting a question. I'm trying to understand. Now, what my respectful submission is. शाह साहब, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, मैं फैक्चुअल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ। ये तलाक के बैन का जो था कि भाई वो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इंटेंशन वुड बी कम्युनिकेटेड, देन दे हैव टू वेट फॉर इद्दत पीरियड एंड देयर आफ्टर इट विल कम इनटू फोर्स। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वेदर द हस्बैंड कैन रिवोक इट आफ्टर? ही कांट, so far husband is concerned, it is irrevocable. But is it not punishable by what? मैडम दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी अपन आते हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं। वो एक्ट निकालो भाई, वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, मुस्लिम वुमेन फ्रॉम मैरिज एक्ट सेक्शन 2C is हाँ। very much specific that मैडम अभी थोड़ा सा अपन देखते हैं डेफिनेशन में। कुछ इंस्टेंटेनियस वर्ड भी ऐसा कहीं है क्या उस पर? Instantaneous means 3 divorces. उसमें क्या वर्ड है, थोड़ा सा सेंटेंस बताइए ना। तलाक means तलाक बिदअत। आगे any other similar form of talaq having the effect of instantaneous and यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक। talaq eventually will become मैडम आई डोंट नो, तलाक एहसान, नो इट विल नॉट बी एन इंस्टेंटेनियस, it can be revoked by the husband. That's why I was trying to understand the definition of the meaning of talaq in the light of the definition of talaq in that act. It has not been confined to talaq biddat only. It has also been made applicable to any other form of talaq which has an instantaneous. Now instantaneous, just a minute madam, मैं थोड़ा सा आपसे discuss कर रहा हूँ. I'm not giving my finding, I'm trying to understand the things. So please assist me. If it is irrevocable on the part of the husband, then can it not be said that so far as the husband is concerned, it is instantaneous? That is my question, sir.
this question is pending before Supreme Court. फाइन तो मैं छोड़ देता हूँ ना, मैं कह देता हूँ इट इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, इसलिए तो चार्ज चलने दो। What Bombay High Court says that it is not instantaneous. मैंने आपसे इतना ही पूछा कि सर अगर हस्बैंड के पास उसको विड्रॉ करने की अथॉरिटी है देन आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर हस्बैंड के पास उसको विड्रॉ करने की अथॉरिटी नहीं है तो उसके तो धनुष से तीर निकल गया। It is irrevocable as per मैंने वही बार बार आपसे पूछ रहा हूँ ना। week's time. अरे मैडम इतना नहीं, अब वो 4:30 के बाद 1.5 घंटा अपन ले गए। इसमें रिसर्च ही कर लेते हैं थोड़ी सी। मैडम आप रिसर्च नहीं करके आई हैं ऐसा? ऐसा नहीं है, हम तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इसमें जो जवाब आया था जो उन्होंने पूछा, मैडम आपकी बात सही है, मैं तो अभी लीगल एस्पेक्ट पे देख रहा था, क्योंकि वहां पे जो डेफिनेशन है तलाक की इन दी एक्ट, अरे यार ये अच्छा इसमें ये है एनी अदर फॉर्म ऑफ तलाक। मैडम पूरा एक्ट का नाम बताएंगे तो? Muslim Women Protection of Rights and Marriage Act 19. Talaq means talaq biddat or any other similar form of talaq having the effect of instantaneous and irrevocable divorce. Irrevocable divorce on the part of the husband, that is also one of the condition. If you say that talaq this ban cannot be revoked by the husband and only he has to wait for 3 months. I'm saying that he can. No. Arey madam, I'm trying to understand. I'm not putting any word in your mouth, sir. With respect to this, मैं आपसे अरे मैडम मैं सुनिए सही, मैं आपसे कह रहा हूँ, if I say suppose चलो आप if you are in reservation about that word के भाई उसका हम अपने ऊपर ले लेते हैं। If I say मैं आप I don't exactly, I do not know the real meaning of तलाक ban, इसलिए फिर भी if I say that so far as the husband is concerned, the moment this notice is sent, then it would become irrevocable on his part, except waiting for the 3 months period of 3 months. And after 3 months, it would become operative without any ifs and buts. So irrevocable on your part would be instantaneous. On your part means on the part of the husband. Now suppose if you say, as you were saying earlier, that there would be a reconciliation proceedings. And in case if the reconciliation proceedings fail, only then it would become operative. So it would become like a contingent contract, if dependent upon the happening of certain things in future, right? If that is so, whether any reconciliation proceedings took place, then she replied to my notice. Fine, then तो फिर आपका फिर ये proceeding भी complete नहीं हुई. This proceeding is never. So then she will continue to be your wife. The civil suit is already pending for the. That's fine. There are two things. If the period is concerned, fine. There is we don't have any dispute about that. The moment there can be multiple interpretations. The moment the letter is sent or the notice is sent or written information is given, then it would become irrevocable so far as the husband is concerned, but he has to wait for 3 months. One situation. He has to go for reconciliation, and if reconciliation fails, then after 3 months it would become irrevocable. Right? Now, if the reconciliation has to take place, whether those reconciliations did take place or not. If further proceedings were not taken, that what will be the effect of this notice? That will go. Right? So then she is your wife. Or if it becomes irrevocable right from day one, so far as the husband is concerned, except waiting for 3 months, he has no other option to revoke it. Then talaq means talaq biddat or any other similar form of talaq having the effect of instantaneous and irrevocable divorce. If it is irrevocable divorce, then will it not be instantaneous so far as the husband is concerned? If it is irrevocable, then now. if के बात मैं तो वही तो समझना चाह रहा था ना. Since this, what my father. चलिए आप मुझे कल सुबह बता दीजिएगा. For this petition only, my father's submission was that since this question was disputed, I filed a suit also for the dissolution of marriage, where she is very much present. She is present there. So even according to you, this relationship is surviving. It still survives. फिर तो ठीक है. I say that it still survives. Now, Fine. my further submission is that I filed a civil suit also. So, since there was no other way to dissolve a marriage in the Muslim law now,
you have to file a civil suit. हम्म। So I filed a civil suit, notices were issued. मैडम आप इतना दुखी होके बोल रहे हैं since there is no other. But my response permission is that there has to be a way for I it. thought that there was a celebration amongst. I'm saying that two people, unhappy people in the marriage should be separated. नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था कि after that law came into existence, there was a celebration. Lordship, that is not my concern. And this form of divorce is only happen in India, Southwest. Anyhow. So even according to you, marriage is still surviving. Survives. I filed a civil suit. Right, sir. And she, I don't know if she files a reply or not. But what my respectful submission is that this part of the FIR, which says that I have pronounced divorce 3 times in a court, it doesn't substantiate, and in fact, Fine. I have understood. In fact, this is very much the reply of the notice. Right. I have understood. She'll implicate me in the FIR. Right. This is my respectful submission. 52076. अच्छा बाद में लिखा दूंगा नहीं तो everybody is waiting for the term. ठीक चल. 29. Harish Kumar Shukla.